as you all know that our country is celebrating this wonderful 75th years of our independence. Which is tagline as Azadi Ka Amrit Mahotsav. We at Agriculture Skill Council of India, we are also celebrating this Azadi Ka Amrit Mahotsav with series of webinars on the need of future skills in agriculture and allied sectors. And today, organizing this webinar on the topic of laser land leveling, the precursor technology for resource conservation. My name is Nirod Chakraborty. I am regional manager looking after the Northeast operation. So I am also joined by my colleague Ekta has actually organized this thing, Ekta Singh, who is looking after our industry verticals. I am also joined by some of our colleagues from head office. So you all might be knowing that Agriculture Skill Council of India is working under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. And as a sector skill council, we are actually a sector skill council. The skills gaps in agri and allied sector prospective workforce. So today we have with us two esteemed speakers. Mr. Prakash Singh, who is a project engineer from Trimble Navigation India Private Limited, who is basically an instrumentation engineer, rich with more than 14 years of his work experience. Hello, including managing the sales in SARC region. So welcome, Mr. Prakash Singh, and we are all Thank you. So going to be joined by Mr. Gopesh Sharma, who is an application engineer from Trimble. Yeah, I mean Trimble Technologies, and who is also a basically application engineer with experience in precision farming farm technology, and also application of GPS-based technology on farm equipments. So, just short introduction of the Trimble technology is actually it was founded in 1978 in US, and it is registered on a NASDAQ. So over the 40 years, the Trimble has created unique solutions that help the customers to grow their business, and they have over 2,000 unique patents, and also their research and development centers in more than 15 countries. So in agriculture segment, Trimble's agriculture division provides solutions which actually solve the complex technology challenges across the entire agriculture supply chains. So as we all know that this topic is related on the use of laser land leveler. So we now know that the water has been prioritized, and it is most important for agriculture. It is almost 85 groundwater level, and to arrest this dangerous trend of exploitation, there is an urgent need to conserve the irrigation water, various on the farm conservation technology. Our farmers are already practicing this land leveling practices, but this is actually time consuming, expensive, and uneconomic also. So land leveling to laser land leveler is one of such technology which is to conserve the in front of you. So आगे भी सारे इधर है बस इससे छूने से can I request everyone to keep their microphone in a mute position, please? Yeah. So when we are talking about the unevenness of the soil surface, that has a major impact of actually on germination and crop yield, basically. So effective land leveling is needed to optimize the. I'm not going to detail the technology because our expert panelists are there. They will be talking about the technology, and it will also reduce the irrigation time and crop management effort. So effective land leveling is needed to optimize the water use efficiency, improve the crop yield, and reduce the irrigation time. So before I request Prakash Singh to present, I request all participants to chat box. I will be having a separate question and answer session for after this
our speakers officer. And we also like to request you to keep your microphone in a switch in a mute position. So that's it. I would like to hand over the session to Mr. Prakash. Over to you, sir. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you, Mr. Nirad, and thank you everyone for inviting us here, and thank you for attending this webinar over here. I hope everybody is comfortable with English, or shall we continue in our national language, Hindi? I think considering the participants, you can continue with English and Hindi. Sorry? You can continue with English and Hindi. When Hindi means like whenever you feel comfortable. Okay, okay, okay. So, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। और जैसा कि निराज जी ने बताया ट्रिम्बल एग्रीकल्चर के बारे में, एंड जो टेक्नोलॉजी की हम बात करने वाले हैं, लेजर लैंड लेवलर। आई एम नॉट श्योर कि आप सभी को आइडिया है व्हाट इज लैंड लेवलर एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, उसके फ़ायदे क्या हैं और किस तरह से यूज़ किया जाता है, और क्या टेक्नोलॉजी है जो लेजर लेवलर में काम आती है। सो आज की प्रेजेंटेशन जो है और आज का जो वेबिनार है, इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज़ लैंड लेवलर, और लैंड लेवलिंग एप्लीकेशन क्या है, उसकी अहमियत क्या चीज़ है, उसकी ज़रूरत किस लिए है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके, और क्या क्या चैलेंजेस हैं अभी हमारी करंटली एग्रीकल्चर में जब हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन की और वाटर स्कार्सिटी की। तो वेयर दिस ट्रिम्बल लेजर लेवलर प्लेज वाइटल रोल in water conservation and solving the problems of plenty of farmers who are into the crops like ऐसी फसलों में जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है, जैसे कि धान की फसल है या कॉटन है और शुगर केन, इस तरीके से। ठीक है, तो I'll start the presentation। मैं presentation start करूँगा, और first few slides will be taken care by my colleague Mr. Gopesh Sharma। Okay, and in between, if you have any questions or doubts or some suggestions, or we welcome your thoughts on the presentations. And if you miss out in between the presentation, then for sure sorry, presentation के बाद we'll have some open session maybe for a few minutes, जहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन अगर रह गए हैं कुछ, या आपके कुछ विचार हैं, so we can share that in the end. So I'll start the presentation now. Just confirm me if it's visible to all of you. Yeah, it is visible. I hope it is visible to everyone. If the Gopesh, please start. presentation is not visible, Gopesh? Gopesh, you are in mute position. You please unmute your microphone. Gopesh जी, आप mute हो. Hello. Yeah, Gopesh, please. Yeah, please continue. Gopesh, please start. Thank you. Thank you, everyone. Yes, sir. Sir, this is the traditional. This is a traditional method. Okay. I'm ready. Sir, I think his voice is cracking. Gopesh, wait. I think Gopesh is facing some network issues over there. Gopesh, wait. So
I think there's some Hello. network issue from Gopesh end, so maybe I'll take care of it. मेरी वॉइस आ रही है आपको clear? It's Okay. breaking, Gopesh. It's continuously breaking and it's not clear. So you just be there. I'll just continue. Okay. Yeah. So इस स्लाइड में बेसिकली हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज से पहले व्हेन लेजर लेवलर इतना यूज में नहीं था, तो हाउ वर द थिंग्स डन, कैसे लेजर लेवलिंग की जाती थी। आप देख रहे होंगे 3 पिक्चर्स हैं यहाँ पे। बहुत साल पहले जो किसान है वो ऐसे जब बैलों को यूज किया करता था, तो एक लकड़ी का ऐसा पैड लगा के उस पर खड़ा होकर या फिर किसी बच्चे को बिठा के अपना पूरा लेवलिंग करता था। जब ट्रैक्टर्स आए इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, तो थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ। बैलों की जगह ट्रैक्टर ने ले ली और किसान जो है वो उस पैड पे, लकड़ी के पैड पे खड़े होने के बजाय वो ट्रैक्टर पे बैठ के चलाता था। बट स्टिल पीछे जो इम्प्लीमेंट की जगह पे वो एक मे बी लोहे का या फिर लकड़ी का पूरा एक बल्ली टाइप की लगाता था, कुछ वुडन पैड टाइप का, और फिर लेवलिंग करता था। बट स्टिल ये दोनों ही जो मेथड यूज होते थे, और इट वाज अ रिक्वायरमेंट कि ये तो करना ही करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है, लेवलिंग तो करनी ही है, राइट। सो दे वर नॉट एक्यूरेट। सो देन जब हम थर्ड पिक्चर, जो ये वाली पिक्चर देखते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो लैंड है वो, आई डोंट नो इफ इट्स प्रॉपर्ली विजिबल, बट आपने देखा होगा अपने अपने साथ प्रैक्टिकली भी आपके खेतों में, जब आपका लैंड प्रॉपर्ली लेवल नहीं है, तो कहीं जब आप वाटरिंग करते हैं, स्पेशली धान की फसल के लिए जब आप वाटरिंग करते हैं, तो कुछ पैसेज ऐसे रहते हैं जो नीचे रह जाते हैं। वहाँ पे जो है पानी ज़्यादा भर जाता है, वहाँ पे सारा पानी उधर उस तरफ चला जाता है। और जो पैचेस, जो हिस्सा जो आपका खेत का वो थोड़ा ऊंचा रह जाता है, वहाँ पे पानी पहुँचता ही नहीं है, पानी लगता ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है। तो दोनों ही केसेस में, चाहे वो पानी खड़ा हो गया है या फिर पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, दोनों ही केसेस में जो ये जो सिनेरियोज हैं, ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ज़्यादा पानी खड़ा होगा, जरूरत से ज़्यादा खड़ा हो जाएगा, और या फिर कोई पॉन्ड टाइप का बन जाएगा, तो उसमें फिर फंगस वगैरह लग जाएगा। अगर नहीं है तो फिर वो जो फसल को जो मॉइस्चर मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा प्रॉपरली। ठीक है। और सर्टेन अदर फैक्टर्स जिससे कि आप, जैसे आप आपके अगर एग्रीकल्चर में है तो मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा कि क्या क्या किस किस तरह के इश्यूज आते हैं, आप प्रैक्टिकली जो फेस करते हैं जब आपका फील्ड लेवल नहीं है और पानी, कहीं पे पानी ज़्यादा खड़ा हो गया, कहीं पे पानी नहीं मिल रहा है, राइट। तो इस इशू को जो ये वाटर के, सॉरी, लैंड के अनइवन लेवल की वजह से, जो मेरा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेरे पानी का फैलाव खेत में समतल नहीं होता था एकदम, उसको रिजॉल्व करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड, विच इज लेजर लैंड लेवलर, राइट। मैं क्विकली जो इसके कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स, उस पे थोड़ा सा बताऊंगा आपको, राइट। सो ये जो आप लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं पिक्चर्स, दैट इज कॉल्ड स्क्रैपर बकेट, या फिर सिंपल भाषा में बकेट बोलते हैं इसको। इट्स अ मैकेनिकल इम्प्लीमेंट यू कैन से, जिसको कि हमारा जो लेजर लेवलर का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, राइट, वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो जो मेन जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसमें भी 3 चीज़ें आती हैं खास तौर पे। एक तो हमारा जो है लेजर ट्रांसमीटर, जो कि ये आप देख रहे होंगे इसमें, इफ इट्स विजिबल, ट्रांसमीटर में एक रेड कलर की लाइट जल रही है यहाँ पे, राइट। सो दिस बेसिकली इज अ लेजर बीम, राइट। तो आपका जितना इसकी जो इसकी रेंज है, 400 मीटर की रेंज रहती है इसकी, रेडियस, राइट। तो ये अपने आसपास 400 मीटर की रेडियस में एक लेजर की लाइन, एक प्लेन वो बना देता है, लेजर बीम डिस्ट्रीब्यूट करता है कंटिन्यूसली, रोटेशन, गोल गोल घूम के, राइट। देन ये जो लेजर बीम है, ये लेजर बीम जाके जो हमारा, आप देख रहे होंगे ये जो स्क्रैपर मैंने बताया आपको, इसके ऊपर ये लेजर रिसीवर लगा हुआ है, ये जो इस पे लगा हुआ है, और जो यहाँ पे दिखाया गया है नीचे, ये छोटा वाला जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड लेजर रिसीवर। तो ये लेजर रिसीवर जो है, लेजर ट्रांसमीटर का सिग्नल रिसीव करता है, राइट। और देन लेजर रिसीवर जो है, कंट्रोल बॉक्स, ये जो कंट्रोल पैनल कहते हैं हम, इसमें आप देखेंगे ऊपर ऊपर का एरो है, नीचे का एरो है, और ये है कि सेम लेवल का एरो है, ठीक है। तो ये लेजर रिसीवर कंट्रोल बॉक्स को सिग्नल देता है, एंड
कंट्रोल बॉक्स का काम क्या है, जो मेन हम कंट्रोल बॉक्स जो कहते हैं, मतलब जो मेन दिमाग है सिस्टम का, कंट्रोल बॉक्स क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की मदद से आपका जो स्क्रैपर बकेट है उसके लगे हाइड्रोलिक सर्किट को अप एंड डाउन करता है। ठीक है, तो होता यह है कि आपने जैसे लेजर बीम एक लेवल पे मेरी खेत के ऊपर एक लेजर बीम का जाल बना दिया लेजर ट्रांसमीटर ने, तो जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उस खेत में जब ये स्क्रैपर चलाएंगे ट्रैक्टर पे लगा के, ठीक है, तो मेरा रिसीवर क्या करेगा, मेरा रिसीवर हमेशा सिग्नल देगा मेरे कंट्रोल बॉक्स को, इस मेरे लेजर की इस कंट्रोल पैनल को, कि मेरा लेजर बीम इस लेवल पे है, तो मुझे उस खेत का लेवल भी बकेट को इस तरह से मेंटेन करना है कि मेरे पूरे खेत का लेवल जो है उस लेजर बीम के पैरेलल आ जाए। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जहां पे मेरा खेत ऊंचा है वहां पे तो जो ये कंट्रोल बॉक्स है वो बकेट को नीचे कर देगा, दबा के चलेगा, ताकि जो एक्सेस मिट्टी है मेरे फील्ड में उस पर्टिकुलर पोजीशन पे उसको वो स्क्रैप कर लेगा, मतलब खींच लेगा अपने साथ। ठीक है, ऐसे ही जहां जहां से एक्सेस मिट्टी होगी उसको वहां से ये स्क्रैप करेगा, स्क्रैप ऑफ करेगा, खींचेगा, निकालेगा, एंड देन जहां पे फील्ड का लेवल कम होगा, जहाँ पे कुछ खड्डा होगा या फिर थोड़ा सा हम्प नीचे की तरफ बना होगा, वहां पे जाके उसी सेम मिट्टी को जो उसने ऊंचाई वाले हिस्से से स्क्रैप करी है उसको लाके वो निचले हिस्से में जाके फिल कर देगा। तो ऐसा 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 करते करते जब वो पूरे फील्ड में जब आपका लेजर लेवल चलता है, तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप उस फील्ड को कम्प्लीटली लेवल कर लेते हैं, तो आपका जो फील्ड है वो आपको प्रॉपरली लेवल मिलता है फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, और मे बी सेंटर से लेकर आपके किसी भी कोने में आप जाएंगे तो आपका जो फील्ड का लेवल है वो आपको सेम मिलेगा। राइट, एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई सवाल इसके ऊपर कुछ? Requested to put their queries in the chat box. We take it together. सॉरी, Ask the participants to put their queries in the chat box. ओके 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 ओके, तो विल मूव नेक्स्ट। राइट, तो जो मैं अभी आपको पिछली स्लाइड में बता रहा था, तो इस पिक्चर्स में जस्ट वही एक्सप्लेन किया गया कि ये हमारा लेजर ट्रांसमीटर है जिसको एक तिपाए पे लगाया जाता है, ट्राइपॉड पे। राइट, और जो लेजर ट्रांसमीटर है एक लेजर बीम एक जनरेट करता है अक्रॉस अक्रॉस द फील्ड। राइट, और ये आपका स्क्रैपर है, ट्रैक्टर के पीछे माउंटेड है विद आपका जो स्क्रैपर चलता रहता है ट्रैक्टर के पीछे। देन स्क्रैपर के ऊपर ही आपका ये एक स्टैंड लगा होता है जहाँ पे हमारा रिसीवर माउंट रहता है। ठीक है, तो ये रिसीवर जो है लेजर से निकले हुए सिग्नल को रिसीव करता है, देन इट कम्युनिकेट्स विद द कंट्रोल बॉक्स, कंट्रोल बॉक्स को बताता है कि जी हमको ये लेवल मेंटेन करना है। अकॉर्डिंगली कंट्रोल बॉक्स controls the hydraulic system of this hydraulic cylinder of this scraper bucket to move the scraper up and down. ओके, दूसरी पिक्चर में सेम दिखाया गया कि कैसा चलता है ये। अपना स्क्रैपर बकेट पीछे लगा हुआ है, रिसीवर है ऊपर, कंट्रोल बॉक्स माउंटेड है, और यू कैन सी कि फील्ड काफी हद तक लेवल्ड है, जैसा हम पिछली फोटोज में देख रहे थे कि कहीं ऊंचा था कहीं नीचा था, वैसा नहीं है। राइट, और नीचे हमने कुछ जो इसके ट्राइड एंड टेस्टेड बेनिफिट्स हैं लेजर लेवलर यूज करने के आपके फील्ड में, वो कुछ मेंशन किए गए हैं कि आपको एक तो प्रिसाइज लेवल मिलता है और स्मूथ सरफेस मिलता है आपके फील्ड का जब आप लेजर लेवलर यूज करते हैं। स्मूथ सरफेस मिलने से और प्रिसाइज लेवलिंग से क्या होता है कि आपका जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, जब आप खेत में पानी का भराव करते हैं, जल भराव करते हैं जब अपनी फसल के लिए, तो हर कोने पे और हर हिस्से पे एक समान पानी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फैलाव होता है या भराव होता है। ठीक है, थर्ड क्या बेनिफिट है इसका कि इससे जो है आपका पानी एक तो बचता है, क्योंकि जैसा हम देख रहे थे पिछले पहली स्लाइड में कि मेरा कहीं पानी ज्यादा है कहीं नीचे है, तो जब भी आपका खेत अनइवन होगा, ऊंचा नीचा होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप पानी भरते रहेंगे तो जहाँ पे नीचा होगा वहां तो जल्दी भर जाएगा, लेकिन जहाँ पे ऊंचा है वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगाता है और आपको ज्यादा पानी करना पड़ता है। राइट, तो दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल एज वाटर। बट विद लेजर लेवलर जहाँ पे हम एक तो पानी की बचत कर रहे हैं, ठीक है,
क्योंकि हम एक समान जो फील्ड है मेरा, वहाँ पे पानी जल्दी फैलेगा, राइट। और सेम टाइम पे हम अपनी जो लेवलिंग टाइम जो हमें लगता था पहले, और जो सही भी नहीं होता था, फिर भी हम अपना टाइम पूरा इन्वेस्ट करते थे उसमें, वो टाइम हमारा बचता कहीं ना कहीं। ओके, तो जब हम बात करते हैं वाटर सेविंग की, तो अराउंड 20 to 30% जो है हमारा वाटर सेविंग होता है इसमें, विच इज प्रूवन. There are certain letters and research papers from institutes like ERI और जो पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, उनके थ्रू कि जो भी बेनिफिट्स हैं, जो हम परसेंटेज की बात करते हैं, वाटर सेविंग कितना है, कितना यील्ड इम्प्रूवमेंट है, और कितना वेट इम्प्रूवमेंट, वेट रिडक्शन है, दीज ऑल आर ट्राइड एंड टेस्टेड. ये सब स्टडी किया गया है ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रीज के द्वारा. ठीक है, तो जब हम 6 से 10% यील्ड इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि हमने कुछ उसमें अलग कर दिया या फील्ड का साइज बढ़ा दिया. जस्ट हमने क्या किया कि जो एरिया हम पहले लूज कर रहे थे बिकॉज ऑफ कि ज़्यादा पानी लग जा रहा था, या फिर फसल सड़ जा रही थी, या फसल सूख जा रही थी, पानी नहीं मिल पा रहा था, उस प्रॉब्लम को हमने एड्रेस किया विद लेजर लेवलर. ठीक है, तो हमारी जैसे आपने सीडिंग किया है 1 एकड़ में, तो जितने भी सीड हैं उनको, हर सीड को प्रॉपर जितना भी रिक्वायरमेंट है, उनको उतना पानी मिलता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का, तो दे गेट ऑप्टिमम वाटर फॉर ग्रोथ. ओके, तो जब हम ये जो पॉइंट है हमारा 6 to 10% डील इम्प्रूवमेंट, तो दिस इज एक्चुअली जो हमारा वेस्टेज था उसको हमने प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर लिया अपनी, राइट. एंड एट द सेम टाइम वीड रिडक्शन की जब हम बात करते हैं कि जैसा अनइवन लैंड में आपने देखा होगा, जो अभी एग्रीकल्चर में आप जितने भी लोग हैं, जब भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, उस केस में क्या होगा, जहाँ पे ज़मीन जल्दी सूखेगी, वहाँ पे बहुत जल्दी फिर खरपतवार वगैरह और बीड वगैरह हो जाता है, पैदा हो जाता है, राइट. बट लेज़र के केस में ऐसा ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूरे फील्ड में आपका पानी एक समान भरा रहता है. ठीक है, तो आपकी फसल बढ़ती रहती है और बीड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, अप टू 40%. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इस स्लाइड में. हमने ये दिखाया है कि जो मेथड्स थे लेवलिंग के, सबसे पहले तो है लेजर लैंड लेवलिंग. जब हम करते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. दूसरा जो रो है, दैट इज ट्रेडिशनल लेवलिंग, जैसे हम बैल वगैरह जो भी करते थे. और थर्ड है कंट्रोल्ड अनलेवल्ड. ओके, और जब मैं कॉलम की बात करता हूँ, तो पहला कॉलम है यील्ड की. पर्टिकुलर 3 क्रॉप का हमने एग्जांपल लिया है कि यील्ड में कितना इंप्रूवमेंट होता है मेट्रिक टन पर हेक्टेयर में. और सेकंड कॉलम है वाटर यूज एफिशिएंसी, की वाटर जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम पानी यूज कर रहे हैं अपने खेतों में, उसका एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाती है. ठीक है, और थर्ड इज बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो. ओके, जैसा देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड में हमारी जो प्राइस की बात करूं अगर मैं, तो जब हम पहले करते थे शायद बैलों के द्वारा या फिर मैनुअल तरीके से, तो उस टाइम पे पर हेक्टेयर में हमारा 4.25 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर ही प्रोडक्शन होती थी. जब हम ट्रैक्टर लेके आए और ट्रैक्टर यूज़ किए, उसके बाद थोड़ा सा फिर भी वो लकड़ी का बल्ली या फिर कुछ मेटल का कुछ इम्प्लीमेंट यूज़ किया, then थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया. बट उसके बाद जब हम लेजर लेवल लाए हैं, तो फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट आया, राइट. सिमिलर गोज विद wheat also, and similar goes to sugar cane also, राइट. तो आप देख सकते हैं कि कितना कितना डिफरेंस है इनमें. Sorry, I don't know how, but it stopped presenting. It's coming now. Presentation is visible. Yeah, visible. Yeah. Gopesh, how's your network connection now? Is it okay, or you want me to continue? गोपेश जी इज इन म्यूट. गोपेश जी आप अनम्यूट कहाँ? Gopesh, you want me to continue, or shall I hand it over to you?
Okay, I don't know. Okay, so ये slide simply just एक फिगर्स में और जो हम बेनिफिट्स की बात कर रहे थे उनको जस्ट नंबर्स में दिखाता है कि चाहे बात हो yield इम्प्रूवमेंट की, चाहे बात हो वाटर सेविंग की, वाटर को एफिशिएंटली यूज करने की. Niraj ji, I'm sorry, but I don't know what's happening. Might be some Can connect. still see the slide or what? Now slide is missing now. So I don't know what's happening, but it's automatically stops presenting. Now it is coming. Yeah, it is presenting, but now it has started to stop the presentation every few minutes. I don't know. Okay, apart from the benefits, so these are the effect of leveling on overall efficiency and fuel consumption. So you can see in case of laser leveling, okay, the shear content. Who's Kumar Lavish? It's again stop presenting. Okay, sorry. पता नहीं क्या हो रहा है, but अपने आप ही जो प्रेजेंटेशन है वो बंद हो जा रही है, मतलब शेयरिंग बंद हो जा रही है. प्रेजेंटेशन इज ओपन. तो आप यहाँ देखें कि टाइम इन टिलेज ऑपरेशन मिनट्स पर हेक्टेयर. ओके, तो मिस्टर निराद एंड एकता, Yes, yes, please. I'm facing some issues over here because I'm presenting, but the system is stopping to present after some time. I mean, the share screen option is having some issues, I guess. There is some bandwidth problem, maybe. Sorry? WebEx platform. Yeah, it's an issue from WebEx for sure. I'll try again. ओके, तो जब हम टिलेज की ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर के थ्रू हो या फिर बैलों के थ्रू हो, तो it used to take 105 minutes, which has been reduced to 80 minutes only. Okay, so if you say in time wise, so you're saving up this much time in percentage. Okay, जब हम हैरोइंग की बात करते हैं, जो हम पहले करते थे ट्रेडिशनली मेथड में, सॉरी, तो हमें 115 मिनट लगते थे पर हेक्टेयर में, but that has been reduced to 87.5 minutes only. At the same time, इसको अगर वैसे देखें कि फ्यूल कंजम्पशन की वाइज कितना हमें इम्प्रूवमेंट मिलता है यूजिंग लेजर लेवलर, तो आप देखें कि जहाँ पे हमारा पहले 7 लीटर फ्यूल लगता था, वहाँ पे अभी हम कल्टीवेटर ऑप्शन में सिर्फ 5.5 लीटर में ही अपना काम कर लेते हैं. राइट, हैरोइंग के केस में भी सिमिलर रिजल्ट्स हैं. तो ओवरऑल वी हैव 25% सेविंग इन टर्म्स ऑफ टाइम, or you can say it's a saving of time, or you can say it's a increase in productivity, right? Your productivity, your implements productivity, or maybe your tractors productivity. जो काम पहले आप 1.25 घंटे में 1.5 घंटे में करते थे, वो आप अभी जो है आधे पौने घंटे में अपना क्लियर कर लेते हैं, राइट? सो ये स्लाइड दिखाता है कि एक्चुअली लेजर लेवलर कैसे स्टार्ट हुआ, who was the first person, or maybe who was the father of laser leveler, you can say, in India. तो 2001 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रिम्बल से इंपोर्ट किया था. सो ट्रिम्बल इज द पायनियर इन लेजर लेवलिंग वंस अगेन. सो तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जब 2001 की बात करते हैं, तो कुछ $20,000 जो थी एक सिस्टम की कॉस्ट थी, राइट? तो उसके बाद जब इसको ले जाया गया, तो अगेन सॉरी, एक कैन यू लुक इनटू इट, बिकॉज इट्स doesn't seem good.
sure that it is happening because of the WebEx or connectivity issue? Let's continue. It's coming. Next one. Next. No, yeah, that one. This one. This one. Slide number 7. Yeah. So just like each and every new technology. So when laser started in India, so it was very costly. कीमत काफी ज़्यादा थी, but still कुछ there has to be some initiatives. So one scientist from India ने वो initiative लिया, and then he imported one bucket, one system, a complete system from US, from Trimble, right? उसके बाद they made some bucket or scraper, right? Then यूपी में चलाया गया उसको, और जो ईरी के जो थे मास्टर ट्रेनर थे, उनको सबको टीम को पूरा ट्रेन किया गया, एंड आईसीआर में पहला जो है 2002 में पहला ट्रायल किया गया, और काफ़ी लोग उसमें शामिल हुए थे, बट इट टुक टाइम, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, जब आप एक ट्रेडिशनल तरीका अपना रहे हैं और जो काफ़ी सालों से चल रहा है, तो उसको बदलने में थोड़ी सी अड़चनें आती हैं, थोड़ी मुश्किलें आती हैं, और एग्जैक्टली ये जो है लेज़र लेवलर के साथ भी हुआ। ओके, तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि 2002 के बाद 2005 में जो है, जो हमारे जो डीलर हैं स्पेल टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने जो है कनेक्ट किया पंजाब में विद प्रोग्रेसिव फार्मर्स, जिनके साथ में दे स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द लेजर लैंड लेवलर। ओके, तो जस्ट टू टेल इन्फॉर्म लेट यू नो कि शुरू में जब डीलर्स या फिर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे जाते थे, या फिर टेक्नीशियन जाते थे किसानों के पास कि ये नई टेक्नोलॉजी है, लेजर लेवलर है, इसके ये फ़ायदे हैं, तो द रिएक्शन वाज कि हमें ज़रूरत क्या, हम तो कर ही रहे हैं, राइट? कि हम क्यों करें, हमारे जो लाइक कहते हैं ना, हमारे बाप दादा ने भी ऐसे ही किया है, नाउ दे टीच अस लाइक दिस, अब उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है, एंड आप बोल रहे हो कि जो उन्होंने बताया वो गलत है, तो इट्स नॉट लाइक दिस, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो इस तरह के कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस होते थे शुरू में, जब जब लेजर लेवलर आया या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई, राइट? बट धीरे धीरे जब कुछ लोग कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स आगे आए, दे टुक इंटरेस्ट लिया उन्होंने, और थोड़ा समझा उस चीज़ को, लेजर लेवलर को। देन फ्रॉम देयर इट हैज टिल नाउ इट हैजंट स्टॉप्ड, वो रुका नहीं है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था अभी, पंजाब में या फिर यूपी में, जहाँ पे नोबडी वाज एग्री, जब लेजर स्टार्ट हुआ था इंडिया में, कि भाई नहीं चाहिए, हम क्यों करें लेजर लेवलिंग। आज की मैं अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट सभी जो किसान हैं, हर किसान के घर में आपको लेजर, जिसके पास ट्रैक्टर होगा उसके पास मतलब काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है कि जिसके पास ट्रैक्टर है उसके पास लेजर लेवलर भी होगा, कि आज ये सिनेरियो है। और सेम केस अप्लाइज टू यूपी ऑल्सो, एमपी, हरियाणा, ओके, जो इतने भी नॉर्थ में जितने भी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र में भी। सो देन ऑनवर्ड्स, उसके बाद 2005 के बाद people started adopting or accepting laser leveler, because they were able to see the benefits. Okay, जी, next slide. I think Ekta, you are facing the same issue, just like me. This slide is nothing, but it shows like how experienced Trimble is, और Spectra, जो हमारा मॉडल का नाम है, Spectra laser, how experienced is our company into lasers.
ओके सो यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स दिखाए गए हैं लेजर ट्रांसमीटर्स के और कंट्रोल बॉक्स रिसीवर के। तो ट्रिम्बल इज बीन देयर फॉर सिंस लास्ट 45 years और इट्स लाइक एप्पल। जैसे हम एप्पल मोबाइल फोन में एप्पल को एक बात करते हैं ना कि एप्पल का फोन है, तो इट्स सिमिलरली लाइक दिस। सो काफ़ी जो हमारे क्लाइंट बेस में ऐसे फार्मर्स हैं कि जो feel proud कि they are using Trimble and Spectra laser, and they have been a generation of same time। एक जनरेशन है जैसे किसी के पिताजी यूज किया करते थे, देन सेम सिस्टम जो है वो अभी भी यूज कर रहे हैं, राइट। सो इट्स लाइक दिस with the Trimble laser leveling systems। Ekta, we can skip to the next slide and go to the next one, next to next। Are you there? Jump to next one। I mean jump to slide number 10। Slide number 10। Because slide number 9 is about why we should select Trimble laser, and we are not here for particularly for Trimble laser. We are here for laser leveling. So I think we can skip that one। Yeah। So जैसा जो लेजर लेवलर है वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें क्रॉप यूज करना है या फिर जहाँ पे हम कमर्शियल क्रॉप लगाते हैं वहीं यूज करना है। लेजर लेवलर आप कोई भी आपका, चाहे वो कोई सब्जियों का बगीचा है या कोई भी आपका लैंड है, वहां पे कर सकते हैं यूज। बट स्टिल जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि जहाँ पे पानी जो है मेजर रोल क्रिएट करता है, ठीक है, जो हमारी मेन फसलें हैं जहाँ पे पानी की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, तो वो हमने जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए पिक किया है यहाँ पे कि जैसे हम बात करें 3 क्रॉप, राइस, कॉटन एंड शुगर केन, ठीक है। तो एक केजी ऑफ राइस के लिए जो क्रॉप की हम बात करते हैं तो उसके लिए करीब 3000 से 5000 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम 1 केजी कॉटन की बात करें तो करीब 22,500 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। सिमिलरली शुगर केन पे जब हम आते हैं तो 1500 से 3000 लीटर पर केजी ऑफ शुगर केन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो दिस मच इज द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर दीज क्रॉप्स एंड दैट टू फॉर 1 केजी। सिर्फ 1 केजी राइस के लिए 5000 लीटर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझें कि कोई एक छोटी फैमिली के लिए जहाँ पे कई आज भी इस तरह की कुछ एरियाज हैं जहाँ पे डेली पानी भी नहीं मिलता शायद अपने नॉर्मल यूज़ के लिए, वहाँ पे किसान को इतना इतना डिपेंडेंट है कि उसको 1 केजी राइस जो अपनी वो खेत में लगा रहा है उसके लिए पर केजी हिसाब से करीब 3 से 5 हजार लीटर पानी चाहिए उसको, राइट। तो उस सिनेरियो में वी आर फेसिंग दिस मच चैलेंज इन टर्म्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। Similarly for cotton and sugarcane and many other crops also, क्योंकि water is required, right? So that is where laser leveling plays a vital role, though it is required is recommended for each and every field, right? To level it so that it's even and जो आपका जो फसल लगता है एक even surface पे जो फसल लगेगा that will be healthier, uniform, okay? Yeah, next one, okay. So next slide again it shows similar patterns of ground level crisis, ground water crisis जो हम अभी फेस कर रहे हैं। और आपने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा या फिर आप जो आपके कोई नियर बाय हैं सुनते होंगे कि हफ्ते भर से पानी नहीं है या फिर पानी की दिक्कत है, कहीं पे टैंकर आ रहे हैं, ऐसा कुछ। एंड ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डे बाय डे डिप्लीट हो रहा है। तो सिचुएशन इज क्वाइट अलार्मिंग, ओके। So the good thing is laser is accepted, well accepted amongst plenty of regions। जैसा मैंने बताया इसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, even in south of India में भी people are slowly moving towards laser leveling। So it's not like
it's on a good pace, but yes, they are looking toward it now. पहले वो देखते भी नहीं थे, अभी थोड़ा सा there is some interest कि what is laser leveling. Okay, so things are changing, and changes are required in terms of how we the farmers are working in the field, because agriculture is the backbone of any society. ठीक है, तो when it's a change for good, जैसे हम बात करें कि वाटर सेविंग की, वाटर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, right? तो I think laser leveler is a technology where which helps a lot. Next slide, please. Yeah, so again, coming from the slide where we showed like पानी का कैसे कैसे कहाँ पे शॉर्टेज है, किस किस रीजन में शॉर्टेज है. In this slide we are basically showing कि जब हम मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं, राइस, sugar cane and cotton, तो which are the region who lead the production of those particular crops. जब मैं राइस की बात करूं तो आप देखें जो नॉर्दर्न बेल्ट है वो थोड़ा सा है. शुगर केन में इट्स ऑल अक्रॉस नॉर्थ टू साउथ एंड समवेयर इन महाराष्ट्र लॉट. बहुत सारे शुगर मिल्स वगैरह हैं महाराष्ट्र में, एंड विद दैट many machinery is also like sugarcane harvesters also being used in majority in Maharashtra. Then cotton is again in this particular region. Okay, so this much is the area where we discuss कि कितना कितना जो crop के हिसाब से हमें water already we need to sustain this production. जो हम बात करते हैं कि राइस की 43.19 मिलियन हेक्टेयर में हम राइस प्रोडक्शन करते हैं, तो based on that, that's much water we require actually to sustain that water, to sustain that production also. Same goes with the sugarcane and the same goes with the cotton. Next. Yeah. So that was about laser levelers. So just आपके आपके बेसिक इंटरेक्शन के लिए और बेसिक उसके लिए आई बिलीव, मेरे को विश्वास है कि कुछ लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा यहाँ पे कि लेजर लेवलर क्या है, मे भी सुना होगा या देखा होगा. बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी थॉट्स, please feel free to ask. Thank you. Okay, thank you, Mr. Prakash. So Thank I you. think I request once again participants to put their queries. You are not audible. Am I not audible? Hello? Ekta, am I audible now? Firoz sir, you are not audible. Yeah, I'm in unmute condition. Am I audible now? Hello? Nirad, you are audible. Yes. Yeah, audible now? Ekta? Ekta, are you there? Hello? Ekta is on Prakash, am I mute. audible? Yeah, Ekta is on. Yes, Yeah. sir. Okay. Thank you, Mr. Prakash, for your opening the wide knowledge Thank you. spectrum of Thank this you. new technology. Yeah, we are expecting some queries which will be request to stay online, and I think there will be some question and answer session. Sure. So you can answer some queries. Sure. So I'd like to hand over the platform to Mr. Gopesh to do his presentation, please. Mr. Gopesh, thank you. Mr. Nirad, I think we are done with the presentation because Gopesh was facing some network issue. So I covered up the slides. Yeah, I got. Yeah, I also. Okay. Yeah, I thought. Yeah, I think jointly covered in fact. Yeah. Jointly covered in fact. Yes. And so But yeah, coming to Gopesh is open for any questions. If you have any questions, then Gopesh can answer the questions. Okay. Yeah. Yes. Ekta, are you there?
So we request the participants to come up with their queries if you queries after this presentation Mr. Prakash has presented. Yeah. Not able to get ECTA. I think ECTA are you there in the? Am I audible, sir? Yes, sir, tell me. Yes. Now in the question and answer session, is there any Please. that is? Yeah, please facilitate the participants to directly ask questions if they have any. Can they unmute their microphone themselves? Ektaji? Hello. Hello. Yeah, can they unmute and ask their question directly? Yeah. I'm asking the same question. If anyone have any questions and any queries, they can ask or they can write in the chat box. Yeah, please. I could see Dr. Arup Deka from KBK. If you have any queries, sir, please. Mm-hmm. Am I audible, sir? Dr. Deka? Yes. You're audible. I have not received any queries as of now through the chat box. I hope the presentation is well understood or not at all understood. So I hope that they have understood the things. And, I'm okay with both the cases though. yeah. Because when the queries come, it actually helps even the presenters also. I know. Yeah. Right. Hello. Dr. Deka, am I audible? Hello. Yeah. Hello. Yeah, Dr. Deka, please. Am I audible? Yes, Can you hear me? Yeah. You are audible, sir. I want to put. Actually, I want to know that what is the cost range of the laser leveler? What is the cost range? I am from KBK Barpeta. So, you want to know the cost or the range, operating range? No, cost, range of cost. How costly it is? So, technology, so it's like it's a combination of two components. One is scrapper bucket and another one is the laser system. Okay, so depends. I mean, depends based on what sort of category. But I'll speak about Trimble. So if you go for a Trimble laser leveler, it will cost somewhere around. I think Trimble doesn't supply buckets, so that's totally locally manufactured here in India. So the cost of bucket ranges from somewhere around 1 lakh to 1.25 or maybe 4 lakhs based on current scenario, because currently you might have observed like there have been price increase in a lot of commodities like fuel, that impacts a lot itself, and then metal, right, and freight also, and it has made some impact into the cost of laser level system, because our system is imported from US. Okay, so that costs somewhere around I think 3.5, something like that. But again, like we, if you talk about the regions where it's mostly used, like Punjab, Haryana, and UP, MP. So how it works, like the government, they subsidize it somewhere. Sometimes it's 25%, 30%, somewhere even 50%. Okay, so that's how it is, and we have seen cases. I'll give you an example. South of India, where the government, issued subsidy for around 50 or 100 systems, but the customer didn't turn up.
Okay, so that program got wasted. So it's like this: the government want to promote it, but the users are not ready. Like especially in South India, in Northern India, it's widely accepted. Everybody waits for the subsidies to procure a laser leveler. But in South India, yes, it's slowly the things are changing. But yeah, take time. Thank So you. the Thank you. cost wise, it's like this. So if you combine all the costs, so somewhere around of 4.5 lakh, something like that. And there might be some working range also, no? There might be some working range depending upon the field. So, so the if the range is low, then I think the cost will be minimum, isn't it? Well, actually, the system I told you about, so it has a operating range of 400 meters radius. Okay, so it's a dia of 800 meters. Okay, then it totally depends on the type of transmitter that you're using, which is Is it the minimum? The 400 meter is the minimum? no, there are Is it other the models also. There are other models also which are having a range of around, let's say, 150 meters also radius. Okay. Right? Yeah. So the cost will come down, but I doubt whether so it will be somewhere around maybe $50 to $100 lesser than this one. So is there because any Indian company? Is there any Indian company dealing with the product? Yeah, a lot of companies are there. Okay, so even Trimble, we have local distributor over here in Delhi or in South also, right? Okay. To do it. And other than that, yeah, there are other people's also there in for laser leveler. Yeah, but scrapper the implement what I showed you, the implement is basically manufactured locally. It's just a fabricated implement, just like cultivators and rotavators. So it's local made. Yeah. So do you have any information about Northeast supplying this particular that is leveler? The Northeast? Well, Do you have any information? we were exploring to open up some channels over there, but then this COVID thing happened, so we had to postpone the plan. But yeah, Okay. we are open to it, and I'm not sure about exactly Northeast, but yet in Odisha we have good active partners who all actively look upon this opportunities from either side, maybe private sales also, or maybe government subsidy programs also. And then they themselves take initiative with the local government, to incorporate this particular technology into subsidy and promotion. Actually, if you can bring it to Northeast, especially to Guwahati, then I think it will be easier for the farmers to go through the machine, or they can expose to this particular machine, and I think then it will be spread to the farmers. Farmers will come to know about the leveler. No, that was the idea, sir. And as I told you, because the area like northeastern area, which we were thinking to explore the opportunities. But unfortunately, again, this COVID thing happened, because it's our So it's not that's where happening here. yeah. So no problem. I think situations are improving now, and I believe and I hope like everything will come back to normal in a shorter while. For sure. Since Assam, the Assam is a very much rain-fed area, and that rainfall is very much here. So that's why the importance is there. That requirement of this kind of leveler is very much there. So that is utility will be very much. Okay. Because so far Assam's condition is concerned. So sir, my query is like how exactly are the fields? I mean, there are tarai fields or hilly areas. Like how is the No, that distribution of? is plain. Assam it is plain, almost plain.
But lands are very much fragmented, of course. Okay. That fragmentation is very much prevailing there. So on that, actually, on that context, it might be somewhat difficult for using this by a single farmer. So that is also a point to be taken into account. Okay, thank No, you, it's Dr. not like Dutta. that, because our dealer, I think our dealer has worked a lot on exploring the opportunities. If there's a requirement, they even from Delhi, they quote to South India also. The extreme corner of South. So it's not a question of whether they'll be billing, but yes, ultimately, and I believe you'll be agreeing with this. So if there is a market, and if we assess like yes, there's a market and there's a potential, and this could be the game changer for the region, and for the business also, then for sure we'll be happy to be there, and our dealer will surely work it out. And we've been there, as I said, Odisha, the guy in Odisha, so he was I think he explored Assam also, if I'm not wrong. I'll have to check with him, but I'll connect with him, and I'll see. Yeah. Okay, thank you, sir. Thank you, sir, thank you for your very much. Mr. Prakash. information. We have another query, Mr. Prakash. We have a query from Sachin Kumar. His question is, how does laser sensor operate for land leveling mode? Okay, so he wants to see how it works. Okay, it's a good question, and I believe I have one short video over here. Just give me a moment. मुझे 2 मिनट का समय दें मुझे. Yeah, there is a request also to show the video. Please wait, sir. He is arranging. Yeah, just a minute. I'll share my screen. Okay. Sir, Vidyasagar from Hazaribagh. He has requested to show the video. And in the meantime, Ekta has already shared his contact details. If you have any queries, you can communicate with her. Sure. It is already shared. Yeah. So is my screen visible to all? सारे screen देख पा रहे हैं? Yes. Yes, sir, दिख रहा. Yes, sir. Okay. So जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, तो देयर आर 3-4 मेजर कंपोनेंट्स. वन इज ट्रांसमीटर. जो ट्रांसमीटर को हम जो है ट्राइपॉड पे या तिपाया जो हम कहते हैं, तो वो इट्स योर विश इफ यू वांट टू प्लेस इट इन योर इनसाइड द फील्ड, योर विश. Otherwise it is basically placed somewhere distant or maybe outside on the boundary of the field on a higher end. Okay, cause higher end पे इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, खेत में कुछ छोटे छोटे पौधे लगाए होते हैं, फिर पेड़ लगाया होता है किसी ने. तो if some obstruction like that, या फिर कई बार I don't know about north region, but northern India में क्या है कि कुछ लोग कई बार ना कुछ समाधि सी बना देते हैं या कुछ छोटा मंदिर बना देते हैं खेत के अंदर. ओके, तो just to avoid any signal interference due to any obstruction, तो it is advised कि ट्रांसमीटर को थोड़ा सा हाइट पे लगाया जाए. ओके, then receiver is mounted on this scraper bucket, इस रॉड के ऊपर. जी. Sorry, Prakash. Yeah. I mean, this is contradicting to what I have understood. One thing, if others doesn't mind, like what talking that. Mr. Nirad, I'm really sorry, but your voice is cracking too much, and it's hard to understand. Can you come again? Hello. Yeah. Yeah, is it audible now? Yes. Am I audible now? Much better. Yeah, my query is, you told that the range of this laser is 400 meters. 400, that 400 meters, radius, right? 400 radius, right? Yeah. So that means wherever you place this tripod, it will cover the 400 meters. Yes. Suppose my land is 1 hectare and keep the tripod in the the end of the plot. So it will cover up my entire plot, because it will cover the other plot also. Yes. So that's why I'm saying, sir. You have to decide on the placement where you want to place it.
Okay, so as you said, you have a larger field. Okay, so you have a field which itself is around within 700 meters of this thing. Okay, so what you can do is you can place a transmitter in the center of your field. Okay, then maybe Yes. you can laser out the whole area, right? And your Yeah. problem is solved. Okay. Yeah, yeah, And please. Okay, thank you. Yeah. if you take it otherwise, let's say you got a much larger field than that, right? So what you will do is you will place your transmitter at one end, okay, or maybe center. Half area you will cover from this side, half area you will cover from this side. Okay, it's like that. Okay. So it both. Yeah, So please. it depends on you know what locations suits best for your application. Okay. Yes. Please play the video. Okay, so just for the component side, so this is the receiver and this is the control box over here, and tractor you know very well. This is scraper bucket, and if you can see this this black rod with the white this mark over here, this is a pneumatic hydraulic cylinder. Okay, and this is the hydraulic hose which operates this pneumatic cylinder, right? And this cable is connected to the control box somehow. So now I'll play the video. So the laser transmit the laser signal. So you can see that it's just quite the receiver receives the signal and it's parallel to the level, okay, to the field. Okay, ये एकदम जो मेरा खेत है जहाँ पे मुझे लेवलिंग करनी है उसके समांतर में इसने लेजर बीम छोड़ दी. Okay. Laser bucket and tractor and then the control box. कंट्रोल बॉक्स को लेजर रिसीवर सिग्नल देता है कि मेरा अब देखिए यहाँ पे मेरा ऊपर आया तो ये हो गया, ठीक है. अब ये जब जहाँ पे नीचे आया वहाँ पे उसने मिट्टी खाली कर दी, ठीक है. Right. If I go back, आप ये ध्यान देना इसमें ध्यान दें कि जो मेरी लेजर बीम है ना, ये मेरी ये डिस्टेंस जो मेरा ये और ये डिस्टेंस है ये मेरा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. एंड दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ लेजर लेवलर कि जो जब मैंने एक बार लेवल सेट कर दिया कि मेरे को इस लेवल पे इसको चाहिए, तो ये जो स्क्रैपर है लेजर रिसीवर है ये है, इट विल मेक श्योर कि ये लेवल मेरा पूरे फील्ड में मेंटेन हो. ये देखिए जहाँ पे मेरा लेवल नीचे था, ठीक है, तो उसने बकेट को ऊपर कर दिया कि यहाँ से मेरे को मिट्टी नहीं लेनी है, ठीक है. अब जहाँ पे लेवल ऊंचा आ रहा है वहां से ये बकेट को नीचे करेगा, मेकिंग श्योर कि मेरा जो ये लेजर बीम का ये डिस्टेंस जो है ये वाला डिस्टेंस फील्ड से लेजर बीम का ये कांस्टेंट रहे, ठीक है. इसने यहाँ से जो एक्सेस मिट्टी थी उसको उठा लिया एंड यू कैन सी कि ये जो मेरा डिस्टेंस है अगेन ये लेवल मेरा 0 0 है. अब जब ये इस लेवल पे आया, यहाँ पे लेवल काफी नीचे है, तो व्हाट इट विल डू, द रिसीवर विल गाइड द कंट्रोल पैनल कि भाई अब मेरा जो है लेवल नीचे है, बकेट को ये ऊपर उठाने का सिग्नल देगा. हाइड्रोलिक सिस्टम से हाइड्रोलिक सिलेंडर से बकेट ऊपर उठेगी और जो मिट्टी जो हमने स्क्रैप करी है पीछे वाले एरिया जो ऊंचे वाले एरिया से वो नीचे वाले एरिया में फिल हो जाएगी. Any questions? Hello? Hello. Yeah, any questions? Yeah, one question. Please. The calibration, what you were saying just now, as per the field, can't that leveler be calibrated as per this requirement of the size of the field?
I didn't get your question. It's about range or it's about It's the range. It's the range I'm talking. I think, no. Range. Colonel Inderjit sir, please correct me. What I have understood, what he's asking is, what is the size of the bucket? Like, amount of, say, No. crank to be displayed. No. So What the question you were asking earlier, if the Mhm. field is bigger or smaller, Mhm. can't we calibrate the laser beam where No. it No. So it's like by default when a company ships the laser transmitter, so it is already mentioned in the brochure how much range up to how much range it can work. Okay, so Okay. you can't alter that. So you got a maximum range of 400 meters radius. So within that range, you can work like 200 meters or 300 meters based on your field size. You can work. Okay. But if you want more than that, so what you have to do is you will have to place the transmitter accordingly as per Okay. your requirement. Okay. Yeah. One more But if question. it's How much? This is economics in this. Mhm. How much man hours of saving can we do with this? So it's quite simple. So it's generally like just to go with the traditional way of leveling than this one. Yeah. So I would say I got a recent example like in for 1 acre of leveling. Okay, earlier I'll put it like this. So it used to take around 1.5 hour, maybe 1 hour and 15 minutes, right? But now it can be done within 40 minutes, half an hour, 40 minutes, like this. So this much, nearly half an hour, 15 minutes to half an hour you save on particular 1 acre using laser leveler, right? And I'll request Mr. Nirad if you can Yes. I'll forward one research paper where entire study has been done on this laser leveler through with the from a government institute. Okay, like Okay. what are the usage, what are the benefits, and exactly they have mentioned like in percentage. Okay, in manpower saving or maybe water saving, and if you're saving water, then The analytical lot of data are there. yeah, lot of people use this tube well water. So for that they have to pay electricity bill also. Okay, so how does laser leveler benefits in those all aspects. So that is there. I'll look out for it and I'll share with you, and I'll Because be that is what Yeah, I can share it after. Yeah. that is what will be the people understand that thing yes. better, na? Mhm, mhm, mhm. Yes. Yes, In yes, your yes. perspective also, Yeah. people will be understanding that better Mhm, mhm. in that way better than this thing. Yes. And also my suggestion is, Mr. Prakash, as Dr. Deka has already mentioned earlier, that, suppose we are in West and Northeast, so in Mhm, Guwahati, if there is like, demonstration kind of thing, like mhm, where institutions can come and, mhm, mhm, see the quality of this instrument. mhm, mhm. Yeah. So there was Is there any questions from any other participants? one question from Sachin Kumar. What are the problems caused by leveling of land? Mr. Sachin is there. Mr. Sachin, you are there? I think he has left. Okay, so just I'll answer the question so that everybody else knows. So his question was though incomplete. I'm not sure. I'm not sure he was talking about laser leveling or normal traditional leveling. Uh, so laser leveling, for sure, there is no problems if you use laser leveling. But with the traditional leveling, there are issues and problems and problems for the user. That is why laser leveler came into action at the very first place. And we have, I think, the problems with the traditional leveling we have already discussed in the slides I presented. The uneven distribution of water, and because of that, unnecessary weed production in the field along with the crop, which impacts the crop growth and harm. That is the uneven water distribution also causes
issue to the crop growth density, right? So these are some issues that are caused by traditional leveling, which were not addressed until laser leveler came into existence, right? Yeah. So Okay. One more question. One more question. Please. Yeah, one more question from my side. Mr. Prakash Santosh here. Just I want to know at what level we are going to do the leveling, or the methodology was you already explained how it's working. But suppose fixing the tripod at what level? Suppose let's example the bigger land is there. So normally what happened, the traditional people by their visual the observations they are doing that the leveling. How we can know at what level we have to do that leveling? So very, I must say, very good question. Very technical questions. Yeah, thank you. Yeah. So what happens is when laser leveler started, so people used to do this, but now as they've become well versed, so a lot of people don't use it now. So if I have to put it simple language, तो जब भी कोई गाड़ी सीखता है ना, तो जब नया सीख रहा है तो पहला गियर लगाएगा, फिर दूसरा लगाएगा, फिर तीसरा लगाएगा, और जब गियर उतारेगा तो वैसे उतारेगा, 5 में से चौथे पे आएगा, तीसरे पे आएगा. But once he is quite experienced and once he had confidence na, तो sometimes he will directly from 5th he will come to 3rd. Okay, and similarly from second to he will go to 4th. Right. So similar thing is like that. Now coming back to how do we know at what level shall we level our land? So for that there is a term called land survey. Okay. So don't get afraid with the word survey. So it's not that of a heavy exercise. So it generally is we actually try to understand the topology or maybe different levels of the field, and so that we come to a conclusion ki, okay, this is the level where it should be actually be, right? So that my land is level with the optimum time. Okay, so it may happen like even the farmer which is using laser leveler, he will do, he will mount the implement, put up the transmitter, put up the machinery on the tractor, and straight away go to the field and place it a scraper bucket and start dragging the tractor to level the field, right? But in that case, the chances are he will end up more hours of operation to level the field, and the chances are he may end up wasting some soil at the end of maybe a particular corner of the field, excess soil from the same land. So that is why survey is required. So in the survey what we do is we have a unit called eye receiver. Okay, it's simply like a receiver, you can say, as is shown in the PPT. So with that, what we do is we mount it on a measuring scale. Okay, let me see if I have some pictures or maybe videos of that survey. Maybe this one. Yeah. Okay. Let me share my slide. So it's a different application, but the concept I'm just trying to explain the concept. Okay, it's a Trimble transmitter, but it's for the construction use. You can see the logo over here. Okay. So I'll explain as we move on forward to the video. Right. Yeah. So yeah, so you see this here. So it's a kind of a level indicator. So when and this is the receiver. Okay. So what happens is as you move along the rod up, okay,
and when it comes in the range of the laser signal, right, it will start a continuous beep sound. Clear? Hello? Yes, yes, yeah. Okay, You're so audible. let's say your transmitter is mounted at a height of 5 meters, right? Or maybe 5 feet, Yeah. sorry, 5 feet. Okay, then what you'll do is you'll have this receiver, you'll mount it on a measuring scale, okay, and you'll go onto the field at different points. Okay, let's say you go to the field at one corner with this scale and eye receiver mounted on the scale, and you lift the receiver above. Okay, and let's say you open the scale up to 5 meters, and your receiver is at the level of your laser transmitters. So this particular device, this receiver, will start beeping continuously, okay, when it's at the same level of 5 feet, right? So what you will do is you will record the reading on the scale. Let's say maybe it's 5 feet, but on the scale it will show somewhere around 340 meters or maybe 430 meters, like that. Let's say it shows 450 meters, for example, okay, at one corner. So what you'll do is you will take at least 4 corners and 5 points, each of the corner of the field, okay, and one center point, 1 or 2 center point, and you will repeat the same exercise. Okay, clear? So now let's say at one particular point you have to collect 6 points. So at one particular point you got 450 centimeters, and another point you got 452, another point you got 430, and another point you got, let's say, around 435 or something like that, and next unit like that only. Okay, so what you'll do is you will average out these 5 readings. Okay, add these 5 units, multiply it with 5 if you have taken 5 readings, sorry, divided by 5. If you have taken 6 readings, then maybe divided by 6. So you will come to one particular this thing reading. Okay, Average. clear? Yeah, average. So what you will do is you'll take that average as your reference point. Okay, I need to set up my bucket at this particular level, and my field will be leveled at this level, right? So to explain this, let's say my average got 437 centimeters, right? Okay, so I'll take this receiver on the land and place my tractor on the same position. Okay, and what I'll do is, sorry, I'll place this receiver again and try to match it with the 437 centimeter. I'll open the scale for 437 centimeters and make sure that it's matching the signal with the beep. Okay, then what I'll do is I'll take my scraper, place it on that plane, and then start leveling. Okay, so that is how we come to know what should be the level of my field, and at what level shall I level my field. Do I answer your question, sir, or there's still some doubt? I got the answer. Yeah. Thank you, Prakash ji. Thank you. I think we are also coming. We are also running time. Running out of time. I'd like to give a big thank you to the Trimble Navigation India Private Limited. Thank you. Especially and Mr. Gopesh Sharma ji for your detailed and wide coverage of importance of this what you call this fantastic technology of land leveling using the laser technology for conservation of irrigation water, and which you already have described the importance of the use of this technology for more uniform moisture environment crop and less time required for irrigating the land, more uniform distribution of the crop, and the usefulness of the crop like rice, cotton, and more uniform germination and growth of the crops. There are so many advantages, and I would like to thank our esteemed participants also who put valuable questions in their Q&A sessions. Thank you very much for that. Thank you, everyone. Thank you. Yeah, I'd also like to take this opportunity to wish all participants, many of them have already left, but I would like to wish everyone a very happy and safe, peaceful Diwali to all of you.
And I also take this opportunity to thank Ektaji for organizing the event, and she was the engine behind organizing, contacting all these people. And we also have tried from our side. And also I'd like to thank my team from my head office who have joined and support, and they have encouraged me for organizing such webinars. And last but not the least, I would like to extend my special thanks to our CEO, Dr. Satyendra Shingaria sir, for his encouragement. Always he's encouraging us, and under his guidance, we are committed to take the responsibility of transforming the Indian agriculture and allied sectors through skill development for the benefit of the farmers. Jai Hind. Stay safe. Thank you so Thank you, everyone. much. Thank you. Thank you. Have a nice day. Happy Diwali. Thank you.